Let's move on to the next question. A baby presented with abdominal pain. On examination, a mass is palpated in the right lumbar region. A barium enema is done and the image is given below. So what is the likely diagnosis? तो यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन है इसमें क्लिनिकल स्टेम दिया है और उसके एसोसिएटेड यू हैव बीन गिवन बेरियम एनेमा का इमेज और उससे आपको डायग्नोसिस पता लगाना है. यहाँ पर बच्चे को abdominal pain है और there is a mass in the right lumbar region. And if you see this barium enema image, you see that your whole bowel is seen in continuity till this point. यहाँ पर you see this claw-like thing. So this is the claw sign which is seen in interception. So the correct answer would be interception. Interception में there is telescoping of one bowel loop into the other, जिसकी वजह से you get to see this sign on barium enema. So let's see how volvulus, duodenal atresia and intestinal obstruction look like on imaging. So let's see how all these conditions look like on radiograph. So सबसे पहले जो हमारा image है यहाँ पर, this is a barium enema image which was given in our question also. तो यहाँ पे you can see this claw-like thing formed. This is due to the telescoping of one bowel loop into the other. This is the claw sign and we have already discussed this claw sign is seen in interception. Then you have the next image. यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपकी जो डाई है it is going up till a certain point and after that you do not see the dye. इसका मतलब there is some obstruction to the passage of dye here. और यहाँ पर जो आपको obstruction दिख रहा है उसके आगे you see that this is very narrow pedicle. और इसके अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर then you can see that here you can see something very dilated thing. This is nothing but your dilated bowel loop and you have this narrow pedicle. ये क्यों होता है? Because this bowel loop has twisted and this twisting of the bowel loop is called as your volvulus. So this is nothing but sigmoid volvulus. Next, in the next image, you can clearly see that here you have one bubble and this is the other bubble. So this is your nothing but your double bubble sign. तो डबल बबल साइन हमें पता है कि कहाँ मिलता है. इट इज सीन इन ड्यूडेनल एट्रीजिया. तो ये हमारा ड्यूडेनल एट्रीजिया का एक्सरे है. ठीक है. नेक्स्ट हमें जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया था इट वाज इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन. तो अगर आप इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का इरेक्ट एक्सरे कराते हैं तो उसमें यू गेट टू सी कि आपके जो कंटेंट्स हैं वो इस तरीके से सेटल होते हैं एंड यू गेट मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स. तो अगर आपको मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स दिख रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज ऑब्स्ट्रक्शन. तो ये हो गया इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए एक्सरे. सो दिस इज हाउ ये डिफरेंट कंडीशंस दिखती हैं हमें ऑन एक्सरेज एंड ऑन योर बेरियम एनेमास. सो लेट्स सी अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम रिलेटेड अबाउट योर interception. So the most common location for interception is ileocolic. You need to remember this. This can be directly asked as a fact-based question. The clinical features which you will get in a clinical STEM-based question regarding interception would be कि बच्चे को कोलिक की पेन हो रहा है. The child is passing current jelly stools and the child has a sausage-shaped mass in the right upper quadrant. क्योंकि ileocolic is the most common ileocolic is the most common type of interception. You can see this sausage-shaped mass in the right upper quadrant because of this telescoping of one bowel loop into the other. And USG is the most sensitive investigation for diagnosing interception. There you can see this target sign and you can also see the telescoping of one bowel loop into the other. So this is all about interception.